इमरान खान वर्सेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका फैसला की तारीख क्या है? जी 18/7/2018। इसमें क्या फैसला हुआ है? जी इसमें लोकस स्टैंडाई का क्वेश्चन एड्रेस हुआ। स्टैंडाई को छोड़िए, मेरी सॉरी मेंबरशिप का, मेरी मेंबरशिप का माजरत। और जो फैसला SECP ने किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको बरकरार रखा कि मैं मेंबर हूं और इसको दोबारा चैलेंज नहीं किया गया। ओके ठीक है, चलिए खत्म हो गई बात। upheld ECP's decision. ECP's decision, no further challenge. चलिए continue, Mr. Mahdum Ali Khan. My Lord, I was respectfully drawing your attention to the fact that going back, These elections were held unopposed because my Lord read something. yes, please. How can you hold it unopposed? There was nobody contested. There were 3 panels, but at the end of the day, the election commission said that on the last day, the 2 other panels withdrew, and only the panel of Mr. How many posts were contested? कोई भी no post was contested. No, मेरा मतलब how many posts were on to be elected on? They were, my Lord, for the chairman of the party. Total posts कितने थे? Total, my Lord, I'll just count it. Total. Page 79 से शुरू। Let Mr. Sikandar do some work. सिकंदर साहब मुश्किल से हाथ आते हैं। नहीं, यहाँ से है मखदूम साहब, ये पेज 79 Page 78 onwards, my Lord, and 79. एक पोस्ट इलेक्शन है या बहुत सारे पोस्ट हैं? सर एक पोस्ट है, पेज 79 to 80. पेज 79 to 80 in part 1. कभी कभी होता है ना, एक पोस्ट पे नॉन अनअपोज आ जाए। नहीं, सारे पोस्ट आ गए, सारे 15 के 15 अनअपोज्ड हैं, आप देख लीजिए। ये तो जरा सा तो बड़ी हाईली कंटेस्टेड होते हैं सियासत में, बातें लड़ाइयाँ भी होती हैं, मुझे टिकट चाहिए। देखना ये अलग अलग कैटेगरीज में है। जी सर, पहले सेक्रेटरी जनरल, 79 पे है सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स का जो नोटिफिकेशन है। जी सर, इसमें 15 आदमी अनअपोज आ गए। जी सर। उसके बाद पेज 81 पे प्रोविंशियल ऑफिस बेयरर की लिस्ट है बलूचिस्तान की। जी सर, ये 18 अनअपोज आ गए, सब अनअपोज्ड हैं। KPK की लिस्ट आई, उसके बाद 82 पे ये 18 अनअपोज हैं। उसमें सर 20 अनअपोज हैं। 20 है, वो सब अनअपोज्ड हैं। उसके बाद पंजाब की लिस्ट आई है। जी सर, वो 20 है। 20 अनअपोज हैं पंजाब में भी। जी सर। और फिर आखिरी में सिंध की एक लिस्ट आई है, ये भी 17 अनअपोज हैं। सब अनअपोज्ड हैं। तो ये पूरे इलेक्शन में जो रिजल्ट है ना, जो इत्तेफाक से मेरी अभी नजर पड़ी तो फाइल के ऊपर, ये सारे अनअपोज ही इलेक्शन, ऑल ऑफ देम आर 100% हुआ नहीं। Who is this person, Niazullah Khan Niazi? Is he in attendance today? Yes. आप वकील हैं या आप क्या हैं इसमें, या पार्टी हैं इसमें? Chief Election Commissioner PTI. Is he a party in this? Party respondent number 2, Lordship. Respondent number 2, my Lord. Respondent. मगर ये कुछ जरा समझाएं बात। 1-2 पोस्ट तो होती हैं, अनअपोज्ड हो जाते हैं लोग, सारे के सारे अनअपोज्ड आ गए। जी फिर हम जी आपसे नहीं पूछ रहे ना, उनसे पूछ रहे ना, क्या नाम है इनका, नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब से। जी Lordship. ये अजीब सा इत्तेफाक है या क्या है? जी नहीं, अजीब इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स। मेरे रूल की बात सिर्फ आपसे फैक्ट पूछ रहा हूँ ना, बहस नहीं पूछ रहा हूँ। सिर्फ ये तस्दीक नहीं, बताएं नहीं, तस्दीक कर दें। हाँ, सारे अनअपोज्ड हैं। जी अनअपोज्ड, कोई भी नहीं इलेक्शन, एक इलेक्शन भी नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान आपने नॉमिनेशन फॉर्म इशू क्योंकि पैनल इलेक्शन था Lordship, पैनल। अगर रूल्स में पढ़ेंगे जो पैनल में बहस सुनेंगे, आप क्या फिक्र ना करें। ठीक है, ये आप माशाल्लाह आपके सीनियर मोस्ट काउंसिल अटेंडेंस जी, ठीक है। सो दे कंसीड ऑन द फैक्ट दैट दे ऑल अनअपोज्ड। They were all unopposed. Central as well as throughout Pakistan. Central as well as in all the 4 provinces of Pakistan. To which what do you say? My Lord, that is one of the submissions, and that the election commission notes that if the elections were held in accordance with the constitution under the supervision of a proper election commission and the party's constitution was followed, because the election commission takes the position that it's not merely that an election has to take place, the election has to be in accordance with the constitution of the political party. But again, the very word election means what? Simple language means I elect Yes. to engage your services
or elect to engage, to use counsel, Mr. Sikandar Bashir's services. My lord. As counsel, in everything else also election, you want to elect to go to this restaurant or that. Yes. In an election, it will be you elect this person or that person or these number of persons. Yes, ma'am. So otherwise, constitutions and simply say whoever the chairman decides will be deemed to have been elected. So let's either go with democracy, because after all, it's not just democracy, it's representative democracy. And that is what the Election Commission says. And my lord, the Election Commission further says that when it came to the Election Commission itself, there is no document on the record to establish that the previous election commissioner was removed lawfully or that the new Previous election commission कौन सा है? Sir, इनका जो chairman थे previous federal election commission के, there was a gentleman called Jamal Akbar Ansari, and the election commission notes that in its order, which Wasn't it Mr. Justice Fajuddin? my lord, that was much earlier. That was in 2017 at that time, and there a controversy arose again whether the elections were fair or not. But that's not the controversy before your lordship. And Okay. So after that, there was another election commission and another. yes, sir. And Mr. Jamal Akbar Ansari later on ceased to be an election commission, and there were no other election commissioners What is elected. Mr. Jamal Akbar Ansari's viewpoint? My lord, Or he's not been heard? I'm not aware, and he's not arrayed as a respondent by them before the Peshawar High Court, because now Won't he be relevant as a party? my lord, he was not a party before the Peshawar High Court. No, would And he be, in your opinion, relevant party or not a relevant? Not really, my lord. Okay. Not really, because the election commission just takes the position that he was neither removed in terms of the constitution of the party, nor did election to any of the election commissioners, which were, as your lordship noticed, they were to be from each province, one from each province. That took place, and therefore these unopposed election results were declared only and only by the person who is now the respondent number 2 of before your lordship in the petition, and the certificate has been issued. Which certificate? My lord, the certificate which was submitted to the election commission. Can you take us back to that provision of the constitution which requires the whatever? Yes, my lord. Where was that The provision? Page? The election commission, my lord, is set up under the chapter is chapter 1, part 8, elections, article 213 onwards. इधर जो terminology है, it says Federal Election Commissioner. Oh, my lord, you're talking. I'm Page, so sorry. I'm at page 192, which Yes, you had yes. referred to. My lord, I'm sorry, I misunderstood it as the Constitution of Pakistan. No. Federal Election Commissioner. Yes, my lord. But here at page 80, Mr. Niazullah Khan Niazi describes himself as Chief Election Commissioner. My lord, yes. Why not Federal Election Commissioner? Yes, my lord, Because the terminology in their constitution is federal. So he may be of a province or I don't know. Why the terminology has been changed? my lord, Yeah, page 80 पे देखिए. Yes, sir. For instance, इधर वो अपने आप को कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और पेज 192 में आइन में उनके है कि फेडरल इलेक्शन कमिश्नर और फिर वन कमिश्नर from each of the all four provinces and one each from AJK GB, total of 6. Federal Election Commissioner, Chief of the Federal Election Commission, one commissioner from each of all four provinces, and one each from quasi-provincial areas of AJK and Gilgit-Baltistan. They are total of 6 plus 6 plus 1 7. अब आप जरा आ जाइए पेज इनके जो इन्होंने रिजल्ट्स जो दिए हैं Yes, my lord. जी
Yes, ma'am. तो ये वो जो उनके लोकल प्रोविंसेस के कमिश्नर्स हैं वो तो किसी के दस्तखत नहीं है, वो तो आपके जो अपने आप को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। Everything has been done by this particular. मतलब मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए वहां तक तो समझ आ गया, फेडरल तक, तो प्रोविंशियल तक तो सूबों वालों को नहीं फाइल करना चाहिए था। अच्छा, ये इलेक्शंस इनके हर सूबे में हुए हैं या एक ही जगह हुए हैं? सारे केपीके में है। Because the इलेक्शन का वेन्यू केपीके वेन्यू कौन है? venue was KPK पर. नहीं, किस जगह? सूबों का भी और फेडरल का भी अलग अलग हुए वेन्यूज? No, my lord, and so far as we are aware, these all took place. चलिए फिर ये हम इनके लिए सवाल छोड़ रहे हैं खान साहब के लिए। We want to know the venue of the elections, whether all the elections to the federal body as well as the provincial body were also held in Khyber Pakhtunkhwa or they held in the different provinces. The other question, why is the nomenclature been changed from federal election commissioner to chief election commissioner? Why were the results not signed by the other 6 members? Yes. So these are questions which they can just have arisen, which they will respond to if you don't have an answer. My lord, in so far. चलिए आप बढ़िए आगे। अच्छा, now we have a problem. My lord. As you may note that there are 2 chief justices from other provinces, and we had held 11:30 as for the Supreme Judicial Council to meet. I don't know what will happen. We may not have time, we may have time. So certainly not before 1:30, but we'll let you know. So please stay. I mean, you can go away, but come back at 1:30 to find out. We may reconvene. I don't know what will happen there. नहीं तो 1:30 तक तो आप फारिग हैं। आपको हम जब उस अपने कोलीग दूसरे बॉडी में कुछ कह नहीं सकता हूँ, हम जमहूरियत पे चलते हैं तो वो जो फैसला होगा फिर क्या होता है इसका कब कितने बजे टेकअप करते हैं, ठीक है? तो बट 1:30 तक आप लोग आज़ाद हैं। और खान साहब अगर आप जवाब भी तलब कर लें ये जो कुछ सवाल अभी तक उठे हैं। अच्छा, इन द मीन टाइम इज एनीवन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन हियर? ऑफिसर, आप ऐसा करें जो आपकी ओरिजिनल फाइल है। Yes, sir. ओरिजिनल केस की फाइल। जी सर। क्योंकि उसमें क्या फाइलिंग्स हुई थी वो ओरिजिनल फाइल भी ले आइए। राइट सर। ठीक है। और अगर कोई साहब देखना चाहें मतलब आइदर साइड, वो भी उसको मुलाहिजा कर सकते हैं। ठीक है।